Today I am going to start chapter number 3, which is for 20 marks. Chapter number 3, weightage is 20 marks. Okay, in this chapter 3 we will be having these 3 topics. Preparation of financial statements of commercial organizations. What are commercial organizations? Yes, profit motive. Their motive is profit making. Similarly, non-for-profit organizations also. These commercial organizations whose motive is profit making, not for profit organizations, or you call them as Section 8 companies. Companies Act. Section 8 companies. Okay, in Companies Act you will see these Section 8 companies. Their motive is not profit making, charitable. Yes, charitable. Commercial organizations we are going to see other than corporate here. So for companies we are not going to discuss here. Understanding? Companies financial statements we are not going to draft in this chapter. You will have this in group 2. Okay? ग्रुप 2 में आपको ये कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करना आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, preparation of financial statements from incomplete records. Incomplete records in the sense when double entry is not followed. How to prepare financial statements. Okay? These are all the 3 different topics. Commercial organizations. Commercial organizations can be manufacturing entities, non-manufacturing entities. Understood? Manufacturing. Example, manufacturing of plastic bottle. Here, non-manufacturing entities in the sense directly buying and selling bottles. Understanding? Here, this entity is going to manufacture the bottle and then sell the bottle. Here, they are going to buy bottle from some manufacturer and they are going to sell. Their business is only selling, buying and selling. Here, their business is manufacturing and selling. So, in addition, you will have an extra account which is called manufacturing account. Rest all are same: trading account, P&L account, balance sheet. In case of manufacturing entities, you will have an extra which account? Manufacturing account, where you will see in costing also. Manufacturing account, where you find the cost of production, etc. Direct materials, direct expenses, cost sheet देखा है? हाँ. Where you will find the cost of production, cost of sales, cost of production, till cost of production I am talking. This manufacturing account is used to determine the cost of production. Okay? Any doubts till now? No? Next. Commercial organizations other than corporate. I am talking about other than corporate, yes or no? So other than corporate, which entities do we have? One is proprietorship, one is partnership. Only these 2 are in your syllabus. So trading P&L account. For partnership, you will have an extra account which is called P&L appropriation account. This is the format of P&L appropriation account. From P&L account, you will take the net profit and then you will appropriate the profit. This is the closing
This is the closing balance which is transferred to capital account. Clear? P&L appropriation. Only for partnership you will have this P&L appropriation account additionally. Okay? These are all the normal things. Ignore. Now 3.2, which is for non-for-profit, I mean charitable organizations. What are the different financial statements? Receipts and payments account, which is similar to cash account. Okay? Income and expenditure account, which is similar to P&L account, and then the balance sheet. Understood? These are for not-profit organizations. Those are for profit organizations. Understanding? Let's do one sum. Sorry, any doubt? Come to question number 4, page number 174. Page number 174. Adrijay Pal, are you there? Yes, sir. Sir, read the question. Question number 4. From the following trial balance of MS BJ and Sons, prepare the final accounts for the year ended on 31st March 2022 and also the balance sheet as on that date. Okay. They are giving the trial balance. Okay. What they are giving you? Trial balance. Trial balance of BJ and Sons. They are asking you to prepare the final accounts and balance sheet. Final accounts in the sense trading P&L. I mean, if it is a manufacturing entity, manufacturing account, trading P&L and balance sheet. If it is a non-manufacturing entity, trading P&L and balance sheet. Okay? Particulars stock as on 1st April 2021, finished goods debit 2 lakh. Debit 2 Purchases lakh. and sales. 1 second. So, final accounts we are preparing for which financial year? Tell me the financial year. 31st March 2022. That is the date. I am asking the financial year. 21-22. Okay, 21-22. So, for the year ending 31st March 2022. Clear? Now, what will be the opening date of the financial year? 1st of April 2021. 1st of April 2021 will be the opening date of the financial year. Yes. So stock as on 1/4/2021. What is this stock? Opening stock. Correct. Opening stock. Very good. Next. Debit 2 lakh. Purchases and sales. Yes. Receivables, returns, carriage inwards. So purchases is how much? 1 second. Purchases is how much? 22 lakhs because purchases is debit balance. Sales is how much? 35 lakhs because sales will have credit balance. Next, bills receivable 50,000. Next, returns. What is this returns? Purchase return and sales return. So what is the amount of purchase returns? 50,000. Kitna? 50,000. Yes, very good, Adrijay Pal, very good. So purchase returns will have credit balance. So purchase returns is 50,000. Okay.
what is 1 lakh? Sales Sales returns. expense. Sales is will have credit balance. Sales returns will have debit balance. Clear. Next. Carriage inwards, Yes, 50,000. carriage inwards. What is this carriage inwards? Nothing but you can say transportation cost while purchasing the goods. So this is a direct expense. Okay. This will go to trading account. Carriage inwards is a direct expense. Nothing but carriage on purchases, you can say. Okay. Next. Debtors and creditors, 2 lakh and 4 lakh. Okay. What is the debtors balance? 2 lakhs. Creditors balance is 4 lakhs. Next. Carriage outwards, 40,000. Yes, carriage outwards. This is nothing but carriage on sales. You can take it. This is an indirect expense, not a direct expense. Okay. This will go to P&L because this is an indirect expense. Carriage outwards. All sales related expenses, all admin related expenses will go to P&L account. Okay. Next. Discounts, 5,000 debit, 5,000 credit. What is this 5,000 debit balance? Discount allowed. Very good. What is this 5,000 credit? Discount received. This is income, that is expense. Discount 5,000 debit is an expense. 5,000 credit is an income, discount received. Okay. Next. Salaries and wages, 2,20,000 debit. Okay. Salaries and wages. This is an expense. Yes or no? Next. Insurance, 60,000 debit. Yes, this is also an indirect expense. Rent, 60,000 debit. 1 second. Yeah, you are asking something? No, salaries generally, wages is direct. Salaries is indirect. Okay. This is actually direct expense. This is indirect expense. But when they are giving salaries and wages and salaries, you can draft a note and you can take it anywhere. When that is combined, when it is a combined amount, you should draft a note. I guess in this they have taken in the वेगबर सैलरीज एंड वेजेस दिया था, करेक्ट. तो अगर सैलरीज एंड वेजेस है ये P&L में ले लिया था, बिकॉज माइट बी मेजॉरिटी पोर्शन इज सैलरीज. ओके, so because the significant portion is salaries, so it has been taken in the P&L account as indirect expense. Actually wages is a direct expense, salaries is a indirect expense. If the expense account is starting with the name salaries and wages, take it in the P&L. If it starts with wages and salaries, take it in the trading account. Okay sir, why? Because of the significance of the expense. If the expense account is starting with salaries, then you have to assume salaries portion is more. Understanding? Okay. Salaries and wages, this is in P&L. Next, insurance, indirect expense, this is also in P&L. Next. Rent, 60,000 debit. Yes, this is also an indirect expense, P&L. Next. Wages and salaries, 80,000 debit. Yes, wages and salaries. Now this will be a direct expense. Okay, this will go to trading account. Clear na? Yes, sir. Next. Bad debt, debit 10,000. Bad debts is 10,000. This is a loss. Okay, this will go to P&L account. Next. Furniture, 4 lakh debit. Yes, furniture is an asset, balance sheet में जाएगा. Next. BJ's capital, 5 lakh credit. Yes, BJ's capital, this is a liability, balance sheet में जाएगा. ठीक है. Next. BJ's drawings, 70,000 debit. Yes, capital से less होगा ये. BJ drawings. Okay. Next. Capital and drawings actually representative personal account है.
ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लाइबिलिटीज में जाएगा. क्लियर ना? नेक्स्ट, लूज टूल्स. 1 lakh debit. हाँ, 1 lakh debit. This is an asset. You can treat it as an asset, fixed asset, or you can take it in inventory also. Loose tools is generally nuts, bolts, etc. That is a petty item. Generally, people consider it in closing stock. Okay. If it is a significant amount, you can take it in fixed asset or in current asset in closing stock. Okay. It will have debit balance, so ultimately in the asset side only it will not impact much. Understanding? Asset side में ही जाएगा, लेकिन किस हेड में लेगा नोट ले सकता है. ठीक है. Ideally loose tools is a insignificant amount, nuts, bolts, etc. People consider it in inventory, closing stock. Okay. Next. Printing and stationery 30,000 debit. यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जेरोक्स, पोस्टेज वगैरह, वो जो कॉस्ट है ना वो वाला है. ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में जाएगा. नेक्स्ट. Advertising 50,000 debit. यस, एडवर्टाइजिंग, दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L में जाएगा. नेक्स्ट. Cash in hand 45,000 debit. हाँ, कैश एट बैंक 2 lakhs. Cash at This is bank, nothing 2 but lakh bank balance, that is cash in hand. Petty cash 5,000. debit. This is also you can 5,000. assume cash balance. Okay. Petty cash. Next. Machinery 3 lakh debit. Very good. Machinery is an asset. Okay. Next. Commission 10,000 debit, 30,000 credit. What is this commission debit? Commission paid. Yes, commission paid. This is an expense. Debit balance 10,000 is an expense, 30,000 is an income. Commission received. Okay. Now what are the adjustments? Read. Finished goods stock. Stock on 31st March was valued at cost price 4,20,000 and market price 4 lakh. 4 lakhs. What is this stock on 31st of March? Closing stock. Yes, closing stock. Okay. So give this adjustment in the first point. Opening stock में ऐसा बगल में ऐसा लिख दो 1. ओपनिंग स्टॉक है ना ऊपर, उसका बगल में 1 ऐसा दे दो. एडजस्टमेंट्स हम मार्क कर रहे हैं अभी क्वेश्चन में. ठीक है. ये जो एडजस्टमेंट है उस कंसर्न आइटम के साथ इफेक्ट देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ठीक है. नेक्स्ट आइटम क्या था? Depreciate furniture at the rate 10% per annum and machinery at the rate 20% per annum on reducing balance method. WDV मेथड है. ठीक है. अभी फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 4 lakhs. उसका बगल में 2 दे दीजिए. ऐसा फर्नीचर का बगल में 2 दे दीजिए. ठीक है. मशीनरी का वैल्यू कितना है? 3 lakhs. उसका बगल में 2 दे दीजिए. ठीक है. मार्क कर लीजिए. 2 मार्क किया था ना. नेक्स्ट. Rent of rupees 5,000 was paid in advance. रेंट कहाँ पे है देख लीजिए. कितना अमाउंट है रेंट? 60,000. उसके बगल में 3 दे दीजिए. रेंट का बगल में 3 मार्क कर लीजिए. ठीक है. सैलरीज एंड वेजेस. Salaries and wages due but not paid. Rupees सैलरीज एंड 30,000. वेजेस. सैलरीज एंड वेजेस कहाँ पे है? 2,20,000 अमाउंट है ना, उसमें मार्क कीजिए. वेजेस एंड सैलरीज में मत मार्क करना. ठीक है. सैलरीज एंड वेजेस में ही मार्क कर लो. 2,20,000 के बगल में 4 मार्क कर लेना. मार्क 4 beside the salaries and wages 2,20,000. Okay. Then next. Make a provision for doubtful debts at the rate 5% on debtors. At the rate 5% on debtors. What is the debtors balance?
2 लाख, उसके बगल में 5 मार्क कर लेना, 2 lakhs के बगल में 5 मार्क कर लेना, 4 lakhs के बगल में नहीं, 2 lakhs के बगल में, ठीक है। नेक्स्ट, Commission receivable rupees 5,000. कमीशन रिसीवेबल, जो लास्ट आइटम है ट्रायल बैलेंस में देखो, 30,000 के बगल में 6 मार्क कर लेना, 6 ही है ना, 6, ठीक है, मार्क कर लिया। ऑल द एडजस्टमेंट्स वी हैव मार्क्ड। नाउ लेट अस ड्राफ्ट बुक्स ऑफ होम, VJ Sons ना, BJ BJ and Sons. BJ and Sons, books of BJ and Sons. Now what is the first account? Trading account. Trading account for the year ended 31st March 2022, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। You should use balance sheet as on, okay? This is liability side, this is asset side. Only balance sheet signifies as on position. Trading and P&L account, you are determining profit for a particular period. So you should use for the year ended. You know this difference, right? Ha. Now come one by one. What is the first transaction? Opening stock. Trading account में जाओ, to opening stock, कितना? 2 lakhs. इस आइटम में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? है। क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? कितना था? Finished goods stock as on 31st March was valued at cost price is 4,20,000, market price is 4 lakhs. As per AS2 and conservatism concept, conservatism/prudence, you can take anything, prudence concept, inventory should be valued at cost or NRV. NRV is nothing but net realizable value, whichever is lower, ठीक है। This is a prudence concept, you can take as per prudence concept or as per AS2 accounting for inventories, where you will see later on, okay? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर मॉड्यूल 9, उसमें ये आएगा, ठीक है।
Inventory should always be valued at cost or NRV, whichever is lower. NRV you can take it as market price minus selling expenses. Okay, NRV क्या होगा? NRV is nothing but estimated selling price minus estimated selling expenses. Estimated selling expenses, NRV. Here in the question they did not mention selling expenses. Okay, so take market price here 4 lakhs, cost is 4 lakh 20, दोनों में से लेस कितना था? 4 lakhs. So closing stock value will be 4 lakhs. 4 lakhs or 4 lakh 20,000, whichever is lower. You have to value the inventory at that value. Understood? This should be in the note. Working note में होना चाहिए. Working note or note number 1. This should be form part of your answer. Okay, working note carries different marks. You can assume you will get 1 mark for this working note. Clear? Now what is the closing stock value? 4 lakhs. So whatever item is available in the adjustment, you have to give the adjustment twice, because whatever is available in the adjustment, it means it is not considered in the trial balance. Yes or no? Not considered in the trial balance in the sense not accounted in the books of accounts. When something is not accounted in the books of accounts, you have to bring it fresh into the books of accounts. Yes? When you are bringing something fresh into the books of accounts, it should always follow double entry concept. Yes or no? Which concept? Double entry. So one aspect you are taking here, which is in credit. I am taking another aspect in the balance sheets. Balance sheet में inventories. करंट एसेट है ये इधर फिक्स्ड एसेट है. ठीक है, करंट एसेट में इन्वेंट्री ले रहा हूं. इन्वेंट्री इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक. समझ गया? 4 lakhs ना? 4 lakhs, yes or no? Four lakhs. Clear? First item is done fast. Then what is the second item? Tell me the second item. Purchases. Purchases. So purchases is debit balance. Purchases account is transferred to trading account via closing entry. Huh? We have discussed this already. Purchases कितना balance है? 22 lakh. 22 lakhs. मैंने फॉर्मेट नहीं दिया, आप अच्छे से फॉर्मेट दे दीजिए ऊपर. हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज क्रेडिट. इधर बाय सेल्स. सेल्स कितना है? 35 lakh. 35 lakhs. ओके, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हम रिटर्न्स ऑपोजिट में ले लेंगे. आप परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स भी ले सकते हैं. नहीं है तो परचेजेस इधर ले लो, परचेज रिटर्न्स इस तरफ ले लो. वो जो इम्पैक्ट है सेम है. ठीक है, नेक्स्ट. Bills receivable is an asset. Go to balance sheet. Bills receivable. Bills receivable here. कितना वैल्यू? 50,000. 50,000. No adjustment. Okay, next.
Next, what is the item? Returns. First take the purchase returns. Buy purchase returns. What is the amount? Huh? Purchase returns 50,000. 3,000. Either two sales returns. How much? 1 lakh. You can also take two purchases, 22 lakhs minus returns 50,000, 21 lakh 50,000 you can take on the debit side. Buy sales 35 lakhs minus 1 lakh 34 lakhs net you can take on the credit side. That you can do, you can take any manner, okay? You can follow any method. Next, do you have any adjustment for returns? No. Next, carriage inwards. Carriage inwards is a direct expense. How much? Amount? 50,000. No adjustment, right? Huh. Next, debtors. इधर debtors. Debtors का बैलेंस कितना है? 2 lakhs. Do you have any adjustment? Yes. So take this provision for bad debts. How much? See the adjustment there? 5% बोला है. 2 lakhs में 5% कितना होगा? हाँ, इधर देखो 2 lakhs में एक जीरो निकालने से 10% होगा. 10 by 100 is nothing but 1 by 10. So 1 by 10 is nothing but एक जीरो निकाल दो 20,000. 20,000 is for 10%. 5% कितना होगा? 10,000 होगा. उसमें हाफ. ठीक है? 10,000 निकाल दो. 1,90,000 is the balance. Understood? This is the credit part. Debit part you have to. No. 10,000 नहीं करेगा. क्यों? जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया था, क्या दिया है? डेटर्स बैलेंस दे दिया. डेटर्स कितना दिया था? 2 lakhs. बैड डेट्स भी ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं? कितना है? 10,000. नॉर्मली बैड डेट्स का एंट्री क्या होता है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है कि नहीं? ये जो ट्रायल बैलेंस में दे दिया उसका मतलब है ऑलरेडी डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस हो गया टू दैट एक्सटेंट 10,000, है कि नहीं? डेटर्स का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस लेगा ना. ये एंट्री पास करने के बाद ये आ गया. ट्रायल बैलेंस तो इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है कि नहीं? ये जो बैलेंस 2 lakhs है, दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड बैलेंस. So this account is going to trial balance. This is debit balance. So this 10,000 is showing in the debit balance. This debtors is normally having some debit balance. Yes or no? Say for example 2,10,000 earlier. After reducing this 10,000, it came to 2 lakhs. Understood? That 2 lakhs is this one. Understanding na? Say for example, for creating debtors, what is the first entry? Debtors account debit to sales. Yes or no? Understanding? Say for example, here the debtors balance is 2,10,000. Next, there is a bad debt. Bad debt to debtors 10,000. Understanding? This sales is having credit balance. This goes to P&L. Sorry, trading account. I mean, first it has to come to trial balance. Sales account credit 2,10,000. Debtors trial balance में कितना लेगा? Net balance लेगा हमेशा.
तो नेट बैलेंस कितना होगा, 2 lakhs होगा. बैड डेट्स डेबिट बैलेंस है, वो बैड डेट्स डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा. समझ गया? तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, मतलब बैड डेट्स ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है. अंडरस्टूड? Suppose your same example, suppose bad debts 10,000 was given in the adjustment, then you have to reduce from the debtors and then P&L में भी लेना है. P&L, understanding? P&L में भी लेना है. एक है debtors से reduce करना, understood? एक है debtors से reduce करना, that is credit part. Debit part, bad debts is an expense, you have to take it to the P&L. So debit and credit part both should happen. But this is given in the trial balance already, so this is already adjusted. Very good question. Understood na? Here. Debtors 2 lakhs minus provision for bad debts 10,000, 1,90,000. This is the credit part. Now you have to give the debit part in the P&L. P&L. To provision for bad debts 10,000. Understanding? Understanding? In the trial balance there is no provision for bad debts account. So it means till this year they don't have this, I would say they don't have this practice of creating provision account. But now they are asking us to take provision. So from this year onwards, you will have this provision for bad debts account. Understanding? Suppose if last year also provision was taken, you will be seeing this provision account in the trial balance. Yes or no? You don't have this provision account in the trial balance. It signifies that they are practicing, I mean they have decided to take provision from this year onwards. Understanding? Okay. 2 provision for bad debts 10,000 done. Understood? Any doubts till now? I'll take a pause. If you have any doubts till now, you can ask. Online No, students, sir. anyone? Clear? Yes, sir. हाँ. Next item, what is the next item? Creditors. Creditors ना? Creditors balance sheet में जाओ. इधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगा, इधर करंट लाइबिलिटीज ले लो. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ना? नहीं, 4 lakhs. क्लियर? नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड्स. Carriage outwards is an indirect expense, yes? It goes to P&L. To carriage outwards. How much? 40,000. Do you have any adjustment here? No. Next, what is the item? Discount. First one is discount allowed, which is an indirect expense. It goes to P&L. Discount allowed account. How much is the amount? Discount allowed is 5,000. Similarly, we have received some discount. By discount received, how much? 5,000. No adjustment na? हाँ. Salaries and wages. This expense account is starting with salaries, so this is a P&L item. To salaries and wages. सीधा अमाउंट कॉलम में मत ले लो, पहले ले लो, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं? 2,20,000. नीचे और क्या बोला है? Salaries and wages due but not paid 30,000. अर्लियर जो प्रोविजन का अकाउंट, प्रोविजन का एंट्री मैंने बताया नहीं ना, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है,
उसका एंट्री मैंने बताया नहीं ना, इसका एंट्री देख लीजिए क्यों एडजस्टमेंट है। इसका डबल एंट्री मतलब एंट्री पास करना है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है, यस और नो। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 ना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दिस इज द एंट्री। सो पी एंड एल डेबिट साइड है तो इसलिए पी एंड एल में मैंने ले लिया, ये क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी साइड ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई हैव डन, मैंने डेटर से रिड्यूस किया है, अंडरस्टूड। यू कैन आइदर टेक इन द लाइबिलिटी साइड और एसेट से रिड्यूस करना है, अंडरस्टूड ना। एंट्री डेबिट क्रेडिट कैसे कैसे देना है, पहले एंट्री सोच लो माइंड में, बाद में उसका इफेक्ट दे दो, अंडरस्टूड। हाँ, अभी इसका एंट्री क्या था, दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट ना। नाउ कमिंग टू सेकंड एडजस्टमेंट, क्या था, सैलरीज एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, yes or no, this is due but not paid, this is outstanding salaries and wages, yes or no. So outstanding salaries and wages is an liability account, outstanding salaries and wages account क्रेडिट करना है पहले क्योंकि दिस इज अ लाइबिलिटी, कितना 30,000। सर डेबिट क्या होगा, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर। सर हाउ डू यू नो, बिकॉज दे मेंशन सैलरीज एंड वेजेस ड्यू, ड्यू हो गया, ड्यू हो गया मतलब आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, वो खर्चा वो एक्सपेंस को यूटिलाइज कर लिया ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज रिलेटिंग टू करंट ईयर बट ड्यू बट नॉट येट पेड, that's why this is outstanding। salaries and wages account debit कितना 30,000 to outstanding salaries and wages, understood। now what will this 30,000 happen to the debit part, this I'll add it to the salaries and wages, इधर add outstanding salaries, समझ गया, क्योंकि डेबिट जो पार्ट है 30,000, अंडरस्टूड, ये भी डेबिट है वो भी डेबिट है, डेबिट इंक्रीज होगा, यस और नो। हाँ 30,000 इधर ऐड करो, टोटल 2,50,000। सर क्रेडिट जो है आउटस्टैंडिंग वो बैलेंस शीट में जाएगा, इधर देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस कितना 30,000, दिस इज अ करंट लाइबिलिटी विच यू नीड टू सेटल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके, दिस इज अ करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, अंडरस्टूड। एडजस्टमेंट का जो भी है इफेक्ट ट्वाइस देना है, डेबिट एक इफेक्ट है, क्रेडिट एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में जो है वो सीधा एक ही आइटम होगा, उसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बुक्स में कंसिडर किया हुआ है, तो ऑलरेडी उसका डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट किया हुआ है, लेकिन जो एडजस्टमेंट में है वो फ्रेशली बुक्स में लाना है, इसलिए उसका एंट्री पहले सोचना है, डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट देना पड़ेगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था अद्रिजय पाल, बोलो। Insurance 60,000. ओके, इंश्योरेंस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना, तो टू इंश्योरेंस कितना 60,000. 60,000, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ना, नहीं है। No, sir. हाँ नेक्स्ट क्या था रेंट, Rent 60,000. हाँ इसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या, है ना एडजस्टमेंट, क्या था एडजस्टमेंट 3, पॉइंट नंबर 3 देखो, Rent of 5,000 was paid in advance. हाँ वॉज पेड इन एडवांस, इसका अभी एंट्री देखो क्या होगा, ये तो सेकंड वाला है, थर्ड वाला, दिस इज रेंट पेड इन एडवांस, दिस इज नथिंग बट प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट इज एन एसेट, so prepaid rent account debit
prepaid rent account debit, how much? 5,000. To rent account, I'm crediting the rent account. Indirectly, I'm reducing the expense of the current year. Why? Because this 5,000 is relating to expense of the next year. I paid it in advance. Earlier when I paid, I might have written this entry. Rent account debit to cash or bank. Yes or no? When I made the rent payment, I might have passed this entry. Yes or no? Say for example, rent, I mean during the year expenses, say for example, 50,000. Yes? नेक्स्ट ईयर का 5,000 भी मैंने पे किया, तो मैंने क्या किया होगा, 55,000 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 55,000 दे दिया होगा. अंडरस्टूड? नाउ आउट ऑफ दिस 55,000 डेबिट रेंट, yes or no? So this rent is an expense account, it goes to P&L directly. But during the year, actual rent expense is only 50,000. So that's why I am reducing this 5,000. Rent account debit, rent account credit. Understanding? To the extent of prepaid, I have to reduce the expense. That's why I am crediting rent account. Understood? Understood? Now, rent account credit. So, what is the P&L debit rent amount? 60,000. Now you have to reduce prepaid rent. How much prepaid? 5,000. It comes to 55,000. Clear? This is the credit part. Now we have debit part, which is prepaid rent. Prepaid rent is a current asset. It goes to balance sheet. Prepaid rent. How much? 5,000. Clear na? Next, wages and salaries. Wages से start हो रहा है. 20,000. हाँ, wages से start हो रहा है. That's why this is a direct expense. Wages and salaries how much? 80,000. 80,000. Very good. Next, adjustment कुछ नहीं है wages and salaries का. Okay. Next, bad debts है. Bad debts का कुछ दिया था क्या? नो नहीं है ना. हमने ऑलरेडी प्रोविजन है जो डेटर्स के अगेंस्ट में हमने एडजस्टमेंट दे दिया. ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल बैड डेट्स है, तो ये नॉर्मल बैड डेट्स P&L में जाएगा. टू बैड डेट्स कितना? 10,000. 10,000. Understanding? Indirectly P&L has been debited with provision and bad debts 10. Clear? Next, furniture. Furniture, 4 lakh. Furniture 4 lakh. Furniture is an asset. Furniture is an asset. इधर ले लो फर्नीचर. कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसका? या फर्नीचर वैल्यू 4 lakhs है, तो इसलिए पहले ले लो, सीधा अमाउंट कॉलम में मत ले लो. एडजस्टमेंट क्या था? डिप्रिसिएशन है कि नहीं? डिप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%. तो 4 lakhs में 10% कितना होगा? 40,000. WDV बोला है, लेकिन हमको बैलेंस शीट में मतलब ट्रायल बैलेंस में 4 lakhs दिया है, हम इसको ही कॉस्ट एज्यूम करना है. ठीक है, तो 40,000 ना. नेट है 3,60,000. सर इसका एंट्री क्या होगा? मैं एंट्री बताता हूं, तब बाद में आपको डेबिट क्रेडिट का इंपैक्ट पता चलेगा. ठीक है, इसका एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. अंडरस्टूड? दिस इज द एंट्री. सॉरी, फर्नीचर है क्या? हाँ, टू फर्नीचर अकाउंट. ये मशीनरी नहीं, फर्नीचर है. ठीक है, अभी इसका जो डेबिट पार्ट है P&L में जाएगा, ये जो क्रेडिट पार्ट है एसेट से रिड्यूस होगा. डाउट है क्या? क्लियर ना?
3,60,000 इधर मैंने एसेट से रिड्यूस कर दिया क्रेडिट पार्ट को, ठीक है। अभी डेबिट पार्ट है, P&L में जाएगा। P&L कहाँ है देखो, इधर टू डिप्रिसिएशन। टू डिप्रिसिएशन मेरा ये सफिशिएंट नहीं है, P&L का कंटिन्यूशन एक ले रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यूशन। हाँ, मैं सिर्फ ले रहा हूं, आपको तो पता होगा। टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ना ऑन फर्नीचर कितना था, 40,000. 40,000, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, BJ's capital. हाँ कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में इधर पहले ओपनिंग कैपिटल ले लो, ठीक है। ये जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल ना, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आएगा उसका, है कि नहीं, तो ये ओपनिंग कैपिटल ले लो 5 lakhs। 5 lakhs. कुछ डाउट है क्या इधर, क्यों ओपनिंग लेना है? ये नहीं है तो इसको कैपिटल बिफोर अप्रोप्रिएशन भी ले सकते हैं। अप्रोप्रिएशन मतलब बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ओपनिंग नहीं बोलेगा तो, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, इसको एक्चुअली क्लोजिंग बोलना है, लेकिन प्रॉफिट आएगा उसको एडजस्ट करना है। जो ड्राइंग्स है वो ऑलरेडी एडजस्ट नहीं किया है, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट भी दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, समझ गया? इसका मतलब है ड्राइंग्स अकाउंट एडजस्ट नहीं किया है कैपिटल के साथ, तो ये अनएडजस्टेड बैलेंस भी ले सकता है। उसके बाद ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स कितना था नेक्स्ट आइटम? 70,000. 70,000। ड्राइंग्स से उसका कैपिटल कम होगा, इसलिए मैं रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट Loose tools 1 lakh. लूज टूल्स, लूज टूल्स देख लीजिए, एसेट में ले लीजिए या इन्वेंट्री में ले लीजिए, कहीं पे भी होगा। इधर मैं एसेट्स में ले रहा हूँ, ये आप इन्वेंट्री में भी ले सकते हैं। इसका नोट लिख सकते हैं, लूज टूल्स हैज बीन एज्यूम्ड एज फिक्स्ड एसेट। नोट नंबर 2 लिख दो, फिक्स्ड लूज टूल्स हैज बीन एज्यूम्ड एज फिक्स्ड एसेट, ओके। You can assume, you can write the note otherwise also. Loose tools has been assumed as inventory, ठीक है। loose tools कितना है? 1 lakh. 1 lakh, इधर 1 lakh होगा, ठीक है। नेक्स्ट Printing and stationery 30,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000 है, तो ये P&L में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 30,000। नेक्स्ट Advertising 50,000. टू एडवर्टाइजिंग कितना है? 50,000। नेक्स्ट Cash in hand 45,000. हाँ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, तो टोटल इधर अमाउंट डाल देना, मैं इधर डाल दे रहा हूँ ऊपर है, मुझे स्पेस नहीं है, मैं इधर डाल दे रहा हूँ। 45,000 है, एक तो 45,000 है, दूसरा 2 lakh. 2 lakhs 2 है, lakh. एंड अनदर वन 5,000 पेटी कैश। ये सब कैश एंड बैंक बैलेंसेस ही है, ठीक है। इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं है ना? हाँ। नेक्स्ट मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, कितना है? 3 lakh. 3 लाख। इसका एडजस्टमेंट भी है, डिप्रिसिएशन 20%, एक जीरो निकाल दो, 10% इज 30,000, ठीक है। 20% आना है तो डबल कर लो 60,000, ठीक है। लेस डिप्रिसिएशन हाउ मच? लेस डिप्रिसिएशन 60,000, नेट अमाउंट इज 2,40,000। मुझे इधर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने एक्चुअली इसके नीचे लेना है, एक्चुअली ये फिक्स्ड एसेट के नीचे लेना है, ठीक है। मुझे स्पेस नहीं था इसलिए नीचे ले लिया। अब देख लीजिए
ठीक है, ये तो क्रेडिट पार्ट हो गया। डेबिट पार्ट कहाँ जाएगा? पी एंड एल में, है कि नहीं? क्योंकि एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। पी एंड एल में देखो, इधर मशीनरी कितना? 60,000 ना। टोटल डिप्रिसिएशन इज 1 लाख। अंडरस्टूड? लास्ट आइटम क्या था? Commission paid हाँ, 10,000 टू and received कमीशन 30. पेड। इसमें एडजस्टमेंट भी है ना, कमीशन रिसीवेबल का एडजस्टमेंट है, तो पेड का कुछ नहीं है, तो सीधा अमाउंट ले लीजिए। बाई कमीशन, इधर मैं नहीं लूंगा, पहले पी एंड एल में क्रेडिट साइड वेकेंट ही है। पी एंड एल कहाँ है? हाँ इधर, बाई कमीशन रिसीव्ड 30,000. 30,000, इसमें एडजस्टमेंट है, सो 30,000 पहले ले लीजिए। और क्या बोल रहे हैं? कमीशन रिसीवेबल, Commission दिस इज नथिंग बट कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये रिसीवेबल है, ठीक है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री क्या होगा? कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। Understood? Commission receivable is an asset. Commission account, you are increasing the income because this commission, you have earned this commission but you did not receive it yet. You have earned it during the year. So this is current year's income. Understanding? Normally commission received is credit balance. You are again crediting this commission, nothing but you are increasing the income earned during the year. Understood? हाँ, so credit part में दे रहा हूँ, पी एंड एल में देखो, प्लस रिसीवेबल 5,000 ये ना, हाँ 35,000 होगा। कमीशन रिसीवेबल डेबिट पार्ट अभी देख लेना, डेबिट पार्ट, दिस इज एन एसेट, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। कमीशन रिसीवेबल कितना है? 5,000, इधर एक और 5,000 ऐड कर रहा हूं मैं। अंडरस्टूड? वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अभी एक 1 बाय 1 आ जाओ, ट्रेडिंग में आ जाओ, पहले बैलेंस करो। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट है लॉस है? बोलो जल्दी। profit, gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट ना कितना है बोलो, एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं? 13,20,000. 35 कितना? 13,20,000 gross profit. 13,20,000 आ रहा है ना, मैच हो गए ना? हाँ 13,20,000, दिस बगल में लिख दो बैलेंसिंग फिगर टू पी एंड एल अकाउंट, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट यू हैव टू ट्रांसफर इट टू पी एंड एल अकाउंट। दिस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफरिंग टू पी एंड एल, दिस इज ऑल्सो ए क्लोजिंग एंट्री। अंडरस्टूड ना? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफरिंग टू पी एंड एल, दिस इज ऑल्सो ए क्लोजिंग एंट्री। 13,20,000 है। नेक्स्ट इसको पी एंड एल में लेके आना, इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट 13,20,000, ठीक है। अभी 13,20,000 क्रेडिट है, प्लस 5,000 क्रेडिट है, प्लस 35,000 क्रेडिट है। जो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में देख लेना क्या क्या एक्सपेंसेस है, सब आया कि नहीं देख लेना। बैलेंस करो, अभी कितना आ रहा है? 13,60,000 माइनस 45 माइनस 2,50,000 माइनस 10 माइनस 60 माइनस 55 माइनस 10, 7,40,000. 7,40,000 आ रहा है ना?
7,40,000. हाँ sir. This is to capital account, because this profit you need to, I mean this profit business needs to pay to the owner as per business entity concept. Understanding? कुछ आइटम मिस हो गया क्या? नहीं है ना, एग्जैक्टली बैलेंस हुआ है ना, ठीक है. ये कैपिटल 7,40,000 लेके बैलेंस शीट में जाना, बैलेंस शीट में जाओ, इधर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 7,40,000. 40,000. 7,40,000 ना. अभी Yes, sir. 5 lakhs माइनस 70 प्लस 7,40,000 कितना हो रहा है? 5 lakhs minus 70 is 4,30,000. 4,30,000, 4,70,000, 4,70,000, 11,70,000. 1170. हाँ 11,70,000. ठीक है. अभी लाइबिलिटी साइड बैलेंस टोटल करो. 11,70,000 प्लस 4 lakhs प्लस 30,000. 16 lakh. 16 लाख आ रहा है ना. हाँ डेबिट साइड भी करो. मैं बोल दूंगा अमाउंट, एक बार टाइप करो तनुजा. 45,000 प्लस 2 लाख, 2,45,000. ठीक है. 2,45,000, 2,50,000 प्लस 5,000, 2,55,000, 2,55,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2,40,000. 2,40,000. 16 लाख आ गया ना. हाँ ये बैलेंस शीट टैली हो गया. 16 लाख. ठीक है. इसमें मेन था एडजस्टमेंट पार्ट. एडजस्टमेंट जब भी आएगा एंट्री सोच लेना, एंट्री सोच के डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट दे देना पड़ेगा. और दूसरा पार्ट है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, I mean lower of cost or NRV. Understanding? If you receive this sum now, you'll get 14 marks. I mean, if they give the sum in the exam, they'll give it for 14 marks. Because second section जो है जिसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 7, यूनिटी अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7. यस और नो? जो 5 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन इज फॉर 14 मार्क्स. यस और नो? So ये सम 14 मार्क्स में दे सकता है. क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस सम? एनी डाउट्स नीलव? No, sir. Yeah. Thank you.